सीधे लिए चलते हैं विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में। साहिल। So good afternoon. I'm Sahil Pandey from ENI News Agency. So my question is related to China has reacted to India mapping 27 key Arunachal location, says, and it calls it illegal, null and void. What's your reaction to that? Okay. Siddhant. Hi sir, Siddhant from Beyond. Sir, yesterday we saw the meeting between our High Commissioner and the Bangladeshi Prime Minister. What were the key aspects of the conversation? We've extended invite to Bangladesh as well. Have they agreed to coming to India, the Bangladeshi Prime Minister? Okay, Sharadra. सर शैलेंद्र बांगू नेटवर्क 18 से इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, जहां पर हमने देखा कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने कहा है कि उन्होंने शेख हसीना के एक्सट्रेडिशन को लेकर भी और प्लस उस्मान हादी के जो 100 कथित हत्यारे हैं उनको लेकर भी मैटर रेज किया इस मीटिंग के दौरान। उस पर हमारा क्या रिएक्शन? अच्छा। Hello sir, this is Akanksha from Times Now. Sir, can MEA confirm if our missions in Washington and Berlin have been in touch with US and German authorities regarding the custody of Varun Bachagiri, who's been arrested in Berlin with charge of first-degree murder, and given reports that he was expelled from the University of Arizona prior to this incident, does MEA have a mechanism to be notified by foreign universities or host governments when Indian students face expulsion that could impact their visa status? मधु। सर मधुरेंद्र मैं न्यूज़ नेशन से। आज 11 अगस्त है, जिसे बलूचिस्तान अपनी आज़ादी के रूप में सेलिब्रेट करता है और विजुअल्स बलूचिस्तान से लेकर दुनिया के कई देशों से आ रहे हैं जहां इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो जिस तरह से बलूचिस्तान को ऑक्युपाई पाकिस्तान ने किया, वहां के रिसोर्सेज का दोहन शोषण पाकिस्तान करता रहा है और उनके ऊपर एट्रोसिटीज़ करता रहा है। तो भारत का उस पर आज क्या कहना है, क्योंकि आज खास मौका भी है और भारत बलूचिस्तान के साथ अपनी सोलिडरिटी भी कई मायनों में दर्ज करता है। मेरा दूसरा सवाल यूएस टैरिफ को लेकर है कि यूएस का जो फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी है इंडिया को लेकर कि कब रूस से तेल खरीदना है और कब नहीं खरीदना है, कब आपको सैंक्शंस लगाना है, कब नहीं लगाना है, तो इस तरह के प्रस्ताव जो हैं वो भारत और अमेरिका के संबंधों को कितना हर्ट कर रहे हैं? So, Sahil, coming first to your question, regarding the reaction which came from when we put out those 27 names. So let me reiterate this yet again, that Arunachal Pradesh is an inalienable and integral part of India, and this is a fact which is self-evident. At the same time, let me also underline that nothing can change this indisputable reality. अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और यह एक प्रकार से एक स्वयं सिद्ध तथ्य भी है और कोई भी चीज इस निर्विवाद वास्तविकता को बदल नहीं सकता। Siddhant, we had, yes, our High Commissioner yesterday had a meeting with the Prime Minister of Bangladesh. At the meeting, both sides discussed matters of mutual interest. As far as the invitation that you talked about, we have extended invitation for a bilateral visit as also for the BRICS outreach session which will be held here in Delhi. We will keep you updated on this particular matter. शैलेंद्र, आपका सवाल था कि दो मुद्दे का जो आपने उठाया है, एक तो मैं बताऊं कि जो एक्सट्रेडिशन की आपने बात कही, इस मुद्दे पर हमारा पक्ष कई दफ़ा हमने इस मंच से भी कहा है और बड़ा साफ है कि ये मुद्दा जो है इसको हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं जो हमारे एस्टेब्लिश्ड प्रतिक्रियाएं हैं उसके तहत, और जब भी मेरे पास कुछ अपडेट करने को होगा तो मैं आपको इस पे बताऊंगा। दूसरा, हादी के मामले में आपने बताया तो उसमें भी है कि देखिए वो एक लीगल मैटर है, एक न्यायिक मामला है और उसमें इन्वेस्टिगेशन जो छानबीन चल रही है।
Akansha, your question was regarding this, the Indian student who came under, who was I think he was, this is our understanding that he was apprehended in Germany. So we were informed of this particular Indian national that he has committed a serious crime, or alleged to have committed a serious crime in the state of Arizona. Subsequent to that, we also informed our authorities here, who are part of the law enforcement mechanism. Subsequent to that, further we understand that he was apprehended in Germany, in Berlin, and we remain in touch with the US authorities on this particular matter to ascertain more details in regard to the case. मधु, आपका सवाल देखिए, दो चीज़ें हैं कि दुनिया भर में बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं और इन सभी घटनाक्रमों को हम बड़ी पैनी नज़र से और करीबी नज़र से इसको हम इस पर नज़र रखते हैं। आपको साथ ही साथ मैं यही बताना चाहता हूं कि मानव अधिकार के हनन जिसका एक पक्ष हम लोगों ने अभी देखा पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानव अधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोगों को मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है कि मानव अधिकार का जहां तक बात आती है और लोगों के उनके मानव अधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, इस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराना चाहिए। तभी मैंने कहा कि मानवाधिकार के पक्ष को जो वहाँ पर हनन हो रहा है उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में उनको पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराने जाने की जरूरत है। We continue to follow developments across the world. At the same time, I would like to highlight that we have seen the kind of human rights violations that were committed in Pakistan occupied Kashmir and other parts of that country. We call upon the international community to hold Pakistan accountable for its misdeeds, for its abuses, and for flagrant violation or gross violation of human rights, including of all its people. Sorry? Oh, tariff. See, on tariff matters, we have discussion between United States and India. दोनों पक्षों के बीच में bilateral trade agreement पे बातचीत चल रही है और ये बातचीत चल रही है अभी। जब इस पर आप ज़्यादा हमारे पास कुछ कहने को होगा तो मैं बताऊंगा। प्रोग्रेस ठीक रहा है, बाकी विशेष तो आपको कॉमर्स मंत्रालय ही बता सकता है इसमें क्या हो रहा है। So Snehish here from the trade. So what is the situation update on the situation, on the military situation between India and China and Arunachal Pradesh? Has this standoff issue been taken up diplomatically, sir? Okay. So Dhairya Maheshwari from Sputnik. Sir, in recent days we have seen the Foreign Secretary visiting Bhutan and Sri Lanka. Yesterday we saw the meetings between the Indian ambassador and the respective leaderships of Bangladesh and Nepal. So is it part of a coordinated outreach campaign on part of India? And sir, is India also looking to extend invites to other South Asian countries for the BRICS summit? You've already mentioned the point about extending invite to Tariq Rahman of Bangladesh. We saw a report in Nepalese media that foreign minister might visit Nepal in coming days to extend an invite to Balin Shah as well. So yeah, thank you, sir. Sanjay? Sir, this is a corollary to the earlier question. Very alarmed Americans of Kashmiri descent have written to the UN Secretary General asking him to intervene and ensure that this bloodbath in POK is brought to an end. Now, this has just been sent to the UNSG. So, your comments on that, please. Is he?
This is Yeshi Seli from Business India. As a follow-up to the question that Madhurendra asked, will we continue to buy oil from Russia, notwithstanding the sanctions? You've said that we are talking with the US of a trade deal, and you've also said in the past that India will buy oil from wherever it gets because it concerns 1.4 billion. Also, MEA has recently launched a channel on Snapchat. So what is the audience that you're trying to address from Snapchat? Rishabh? Spokesperson, good evening. This is Rishabh from NDTV. So, in the recent days, we have seen the reports and official releases from Pakistan, Turkey, as well as Saudi Arabia on the Makkah Pact. How does India see it, and how do you see the impact of this alliance in the region? Okay. So first, Snehash, coming to your question. In matters relating to the border areas between India and China, we have always emphasized in discussions with the Chinese side that we consider these issues as most serious, and that the maintenance of peace and tranquility in these areas is of the utmost importance. We have also stated that the state of the border affairs will reflect on the state of our larger bilateral ties. This was also reiterated at the recently held 36th WMCC meeting on India-China border affairs, which was held on 6th, and you are already aware of the statement that we put out. At this meeting, the two sides engaged in frank discussions and reviewed the situation along the line of actual control. The Indian side again underlined that maintaining peace and tranquility in the border areas is essential for the overall development of bilateral relations. It was agreed to continue to use existing mechanisms, diplomatic and military channels, including the WMCC, local commander level meetings, and other agreed mechanisms to resolve outstanding issues and avoid misunderstanding and miscalculation along the line of actual control. भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामलों में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं और इन क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमने यह भी स्पष्ट किया है कि सीमा मामलों की स्थिति हमारे व्यापक द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति को दर्शाएगी। इस बात को 6 अगस्त 2026 को हुए 36वें WMCC मीटिंग के दौरान भी दोहराया गया। इस बैठक में दोनों पक्षों ने खुले तौर पर और स्पष्ट चर्चा की। LAC पर स्थिति की समीक्षा करते हुए भारतीय पक्ष ने फिर से इस बात पर जोर दिया कि द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। इस बात पर सहमति बनी कि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन, किसी प्रकार का मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकैलकुलेशन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए WMCC, स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक और सैन्य माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा। There, your question was about the visit of Foreign Secretary to Bhutan and Sri Lanka. We have a policy of neighborhood first. We want to strengthen our ties with countries in our neighborhood. Foreign Secretary visited Bhutan as also Sri Lanka. We had a detailed readout from these visits, and the idea is that we want to deepen our relationship, our ties with these countries in the various domains that we are engaged in. Development partnership happens to be a very important part of that cooperation, and several other issues that were detailed in our press release. So it is part of our overall engagement. On the other aspect, on the invitation, we have invited the BRICS countries, also BRICS partner countries, to attend the BRICS summit here. In addition, we also invited several leaders for the outreach session
from regional groupings. We will keep you updated in regard to the invitations. Srinjoy, I couldn't agree with you more. You know, in the last several months, we have seen that during the elections and before that also, large-scale protests were held in Pakistan-occupied Kashmir. Public discontent were answered with bullets and blackouts and repression and oppression, and many people have been killed. In fact, more than 90 people have been killed and many more have been injured. This has made news across the world. There have been mass violation, grave violation of human rights, and I think it is time that the international community take note of what's happening there and hold that country responsible for its atrocities. Ishi, your question regarding, I need not repeat it, you've actually answered, you know, your question is, the question that you asked, you know, our energy security, what it is predicated on, we have conveyed to you on several occasions. Meeting our national priorities, securing the needs of our 1.4 billion people, as you rightly pointed out, remains the cornerstone of our energy security approach, and this we want to achieve through diversified sources. We want to source our energy through diversified sources. On the question regarding Snapchat, yes, we want to have as effective communication policy as possible, and we want to reach each and every segment of our population. So that is the central idea behind the new mechanism that we've recently started. Rishabh, your question was regarding the agreement that was signed recently. So let me say that we continue to closely follow developments in the West Asia conflict. As far as this particular agreement is concerned, we are examining its implications both from the perspective of our national security as well as considerations of regional stability, peace and stability. India remains fully committed to meeting or safeguarding its national interests and will take all necessary measures in this regard. Kavita? सर, मैं कविता जोशी हूँ, हरिभूमि न्यूज़पेपर से। सर, मेरा सवाल है कि अभी हाल ही में जो नेपाल में भारत के राजदूत हैं नवीन श्रीवास्तव, उनकी मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री बालेन शाह से। तो किन मुद्दों पर मतलब बातचीत हुई, इसमें कौन कौन से इश्यूज रहे, और खास तौर पे मतलब क्या ये अब मतलब माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री शाह जो हैं वो भारत की यात्रा करेंगे? इसके लिए उनको दोबारा से क्या इन्वाइट दिया गया है भारत की तरफ से? और एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन सर, कल आप लोग विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी किया गया था, स्लोवेनिया में जो इंडिया की एम्बेसी है वहाँ पर खालिस्तानियों की तरफ से कुछ उसको नुकसान पहुँचाया गया है, दूतावास परिसर को। तो पहले हम ये देखते थे कि जो खालिस्तानियों के जो प्रोटेस्ट हैं या जो विरोध हैं वो खासतौर पर कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में देखे जाते थे, लेकिन शायद पहली बार हो सकता है कि मध्य यूरोप के देश में खालिस्तानियों की तरफ से इस तरीके से एम्बेसी को नुकसान पहुंचाया गया। तो ये जो एक तरीके से प्रेजेंस बढ़ रहा है पूरी दुनिया में खालिस्तानियों का भारत के विरोध में, ये कितना बड़ा चिंता का मामला है विदेश मंत्रालय का? किस तरह से खतरा मतलब आप इसको देखते हैं? इस पर क्या कमेंट है मंत्रालय का? ब्रह्म सर, ब्रह्म प्रकाश दुबे फ्रॉम जी न्यूज़। मेरा सवाल है कि पाकिस्तान ने हाल ही में जिस तरह से पहले सऊदी अरब के साथ किया था, अब टर्की भी उसमें शामिल हो गया है, जो समझौता किया है तीनों देशों ने डिफेंस को लेकर के, अगर एक देश पर आक्रमण होता है तो सभी पर माना जाएगा। तो क्या भारत के लिए चिंता का विषय है? क्या भारत को इस पर ऑब्जेक्शन है? और दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड कि क्या पाकिस्तान को लेकर भारत का आकलन अभी का क्या है? क्या टेररिज्म को लेकर जो पाकिस्तान सपोर्ट करता रहा है, क्या वो कम हुआ है, और क्या बातचीत की स्टेज नजदीक आ रही है? इसको लेकर क्या आकलन है? थैंक यू। गौतम। Hello, good evening, sir. Gautam Lairi. Yeah, after the meeting with the Prime Minister in Bangladesh, the Foreign Minister has made a briefing to the Bangladesh media where he has said that deepening of relationship between India and Bangladesh will depend on creating a conducive atmosphere. So, what is the comment on your about the conducive atmosphere? Where there is no conducive atmosphere, do you believe? And clarification is that they said for Home Ministry that they have sent all the documents of Hadi's murder
to India government, whether they have sent all the documents of ICT trial of Sheikh Hasina's to the India government? Thank you. नीरज। सर नमस्कार, मैं नीरज दुबे प्रभा साक्षी से। सर भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद फिर से उभरने के दौरान नेपाल के जो विदेश मंत्री हैं शिशिर खनाल, उन्होंने बयान दिया है कि नेपाल सरकार 1816 की मूल सुगौली संधि को ढूंढ नहीं पा रही है जिसने ब्रिटिश भारत के साथ नेपाल की सीमा निर्धारित की थी। नीरज। सर नीरज न्यूज 18 इंडिया से। रॉ प्रमुख एक तरफ द्विपक्षीय बातचीत हो रही है, कूटनीतिक बातचीत हुई बांग्लादेश से, दूसरी तरफ रॉ प्रमुख पराग जैन ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रक्षा मामलों के सलाहकार से मुलाकात की। इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई है, कुछ बता सकते हैं? कविता, पहले आपका सवाल, कल हमारे एम्बेसडर की मुलाकात वहाँ के प्रधानमंत्री के साथ हुई और इस मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों के बीच में जो द्विपक्षीय मुद्दे होते हैं उस पर प्रकाश डाला गया और उसको इस पर द्विपक्षीय मुद्दे पर बातचीत हुई। जहाँ तक भारत की यात्रा की बात है, मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने उनको पहले से निमंत्रण दिया हुआ है। तो निमंत्रण जब वहाँ पर प्रधानमंत्री ने अपना पद ग्रहण किया था उस समय हमारे प्रधानमंत्री ने उनको भारत आने का न्योता दिया है और इस पर जब भी मेरे पास विशेष जानकारी कुछ होगी, इस पे कुछ और अपडेट होगा तो मैं आपको उससे अवगत कराऊंगा। स्लोवेनिया में हिंसा की बात, जो आपने हिंसा कह रहा हूँ, जो वहाँ पर कुछ घटना हुई है उसके बारे में आपने जिक्र किया, तो मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने इसको सख्त ढंग से इसकी निंदा की है और साथ ही साथ वहाँ के सरकार से इस मुद्दे को उठाया है कि वियना कन्वेंशन के तहत जो एक प्रैक्टिस है और वियना कन्वेंशन की जो भी डिप्लोमेटिक प्रेमिसेस हैं उसको पूरी तरह से सुरक्षित किया जाए। तो इस बात को हम लोगों ने यहाँ पर दिल्ली में उनके राजदूतावास से और वहाँ पर वहाँ के विदेश मंत्रालय से, स्लोवेनिया के विदेश मंत्रालय के साथ हम लोगों ने यह बात उठाया है और जो भी इस घटनाक्रम के पीछे लोग हैं उसको तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए और उनको जो उपयुक्त उसके साथ कार्रवाई या सज़ा हो वो उनको दिया जाए। ब्रह्म, आपका सवाल मैंने पहले जवाब दे दिया है लेकिन मैं हिंदी में आपसे ये कहना चाहूँगा एक बार फिर से, यह पश्चिम एशिया संघर्ष के घटनाक्रमों पर, जैसा कि मैंने बताया, उस पर लगातार हम करीबी से नज़र रखे हुए हैं। जहाँ तक इस समझौते का सवाल है, यह अपनी यानी कि हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता दोनों के नज़रिए से इसके प्रभाव की समीक्षा कर रहे हैं हम, और भारत अपने राष्ट्र हितों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इस दिशा में जो भी ज़रूरी कदम होगा उसको उठाया जाएगा। जहाँ तक पाकिस्तान की नीति का हमारा सवाल है, हमारी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है, हम वहीं हैं जहाँ पहले मैंने बताया था इसके बारे में आपको। Gautam, I've already, our High Commissioner met with the Prime Minister of Bangladesh yesterday and they discussed matters of mutual interest. On the other two issues that you raised about extradition of former Prime Minister as also the case of Hadi. On Hadi, I told you that this is a legal matter in which investigations are ongoing presently. As far as the extradition matter is concerned, as I said before, that our position has been very clear on this particular matter, that we are looking into the case as per established processes that we have on our side. नीरज, देखिए, भारत और नेपाल के बीच में हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं। हो सकता है कि कुछ चीज़ों पे सहमति ना बना हो, लेकिन उन जो भी उस प्रकार के मुद्दे हैं उसके लिए हमारे पास द्विपक्षीय वार्ता का एक ढांचा है और उस ढांचा के तहत हम इस पे अपनी दोनों पक्ष बैठ के मिलके इस पे बात कर सकते हैं। नीरज, जिस मुलाकात की आपने बात की उसके बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है। विशेष ऐसा बेहतर होगा कि जो दफ्तर इसमें इन्वॉल्व है उसके वो आपको विशेष इस पर जानकारी दे सकते हैं। कलोल।
Kalol from the Hindu, sir. Sir, it has the plan to invite Mr. Tariq Rahman to Delhi for the BRICS summit. Has that plan hit a bottleneck? And therefore, is there a plan to invite Mr. Rahman, the Prime Minister Rahman, for a bilateral visit to Delhi? And is it expected to take place before the BRICS visit, BRICS summit, sir? Siddharth? Hi, sir. I'm Siddhant from CNN News 18. Sir, Ambassador Sergio Gore met Foreign Secretary Vikram Misri yesterday, and today he met NSA Doval. If you can share some details about these two meetings. Thank you. Sudhi? Sir, Shudhi Ranjan from Bloomberg. Sir, thank you for giving us a broad understanding of the China issue to Snehesh's question, but I'm asking for a clarification. Is the border incident under control through military channels, or there are still discussions going on? If you would give us clarity. Megha? Good afternoon, sir. Megha from NewsX. The Pakistani Foreign Minister Khwaja Asif has now termed itself as a victim of terrorism. He has gone ahead and called the MEA Defense Pact as Islamic NATO, and he has urged these nations who are part of the Defense Pact to come together and address the challenges, as he calls it, faced by India and Israel. What's your comment? Does India endorse this Islamic NATO tag that has been given by Pakistan to this Defense Pact? Raghavendra? Thanks. So this is Raghavendra Verma from ZDF German Television. Could you please tell us the present state of trade relations with China? Strategic relations still guide those trade relations, and especially now with the trade issues with United States, would there be anything rethinking of how they should be dealt now? There are also this WTO dispute which China has gone against India for the solar panels, Indian domestic content requirements. So in this context, is there any change towards China trade policy? Thanks. China or the United States? You also said US. That's because we might expect trade problems with United States over this 100% tariff that might come in. So would there be smoothing of international trade if we have better trade with China? Yeah? So, Kalol, coming to you, as you are aware, and I have already made you, I've spoken about it, that we had earlier in February invited Prime Minister of Bangladesh to visit India, and subsequent to that we've also invited Prime Minister of Bangladesh to visit India for the BRICS summit. On both these invitations I will give you an update as and when I have. Siddhant, your question regarding the meeting with the Ambassador of the United States and a Foreign Secretary, and also his meeting with National Security Advisor. One meeting happened yesterday and the second one happened today. And these were occasions for both sides to discuss the comprehensive global strategic partnership that India and the United States share. There are various elements of it where progress is happening, and both sides remain committed to further strengthening of ties in the areas of trade, defense, energy security, critical minerals, and other such areas. Shruti, on your question, I have already given you our position, and also I have also put before you what was discussed at the WMCC. Over and above what I have already said, I don't have anything else to add. Megha, again, your question is, I've already answered that question. What do we think of that particular agreement which was signed in Mecca? As I told you that as far as this agreement is concerned, we are examining its implications both from the perspective of our national security as also considerations of regional peace and stability. And India, we remain fully committed to safeguarding our national interests and taking any step that may be required in that direction. On the other issue of cross-border terrorism, I did not emphasize that which country holds the is responsible for cross-border terrorism and which is the epicenter of terrorism, and where the action lies on stopping cross-border terrorism.